Good morning to all. Welcome to the Nirja Education. Today we are going to discuss on power sharing, that is a chapter 1 of civics. This is a part 2. For the introduction of this chapter, go through part 1. Now let's start. Majoritarianism in Sri Lanka. What is majoritarianism? Majoritarianism is a belief that a majority community should be able to rule the country in whichever way it wants by disregarding the need and the wishes of the minority. उसका मतलब है कि जो मेजोरिटी में जो होते हैं पीपल्स वो माइनॉरिटी को इग्नोर करते हैं टोटली एंड उनके मुताबिक वो सारा कंट्री में चलाते हैं. दैट इज कॉल्ड मेजोरिटेरियनिज्म. श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. The leader of a Sinhala community sought to secure dominance over the government by the virtue of their majority. In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language. All the policies favored Sinhala's community only and disregarding Tamils. For an example, in the university position, in education, in government job, they favor all the policies to the Sinhalas only, thus disregarding Tamils. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. So what do you understand by the majoritarianism in Sri Lanka? That means Sri Lanka country में सबसे ज़्यादा peoples थे वो Sinhalas थे, that is 74%. And only 18% are there which are Tamil. So उनकी मेजोरिटी की वजह से वो सारे जो बेनिफिट्स थे, एडवांटेजेस थे, वो सिर्फ सिन्हाला पीपल्स को मिल रहे थे और तमिलियंस को वहाँ पे कोई भी अथॉरिटी नहीं थी, कोई भी राइट्स नहीं था. इवन इन 1956 उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया जिसमें सिन्हाला इज़ द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसा उन्होंने कर दिया. उसकी वजह से जो वहाँ के तमिल पीपल थे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. सो दिस इज द मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. देन व्हाट हैपन? बिकॉज ऑफ ऑल दिस वन आफ्टर अनदर श्रीलंकन तमिल फील एलिनेशन. एलिनेशन मीन्स उनको ऐसा फील होने लगा कि वो कोई बाहर की कंट्री से आए हुए हैं, उनको उनकी ही कंट्री में कोई राइट्स नहीं है. जो तमिल्स थे वो बाहर से आए हुए नहीं थे, दे आर फ्रॉम श्रीलंका ओनली. श्रीलंकन तमिल्स वो जो वहाँ पे ही उनका बोर्न हुआ है, वहाँ के ही वो है. देन ऑल्सो उनको उनकी ही कंट्री में एलिनेशन फील हो रहा था. एलिनेशन मीन्स फीलिंग ऑफ बीइंग फ्रॉम द अनदर वर्ल्ड. दे ऑल्सो फेल्ट दैट द सिन्हाला लीडर्स वर सेंसिटिव टू दैट लैंग्वेज एंड कल्चर. जो सिन्हालास पीपल थे वो उनकी ही लैंग्वेज और उनकी ही कल्चर्स को इंपॉर्टेंस दे रहे थे एंड टोटली दे आर इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द तमिल्स. They are even discriminated against in getting a job, government job, educations, university positions. जितने भी वहाँ पे लीगल राइट थे वो सारे उनको नहीं मिल रहे थे, सभी कुछ उनको सिन्हालास पीपल को मिल रहा था. So because of this all reason, दो कम्युनिटीज़ के बीच में वहाँ पे स्ट्रेन होने लगा. द रिलेशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वर स्ट्रेन ओवर अ टाइम. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेन? स्ट्रेन मीन्स नॉट फ्रेंडली. जो उनके जो रिलेशंस थे वो ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ने लगे. सिन्हाला कम्युनिटी टुक वन स्टेप आफ्टर अनदर अगेंस्ट द श्रीलंकन तमिल्स. तो इतने स्टेप उनके अगेंस्ट लेने के बाद श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया? वो ऐसे ही बैठे रहे या दे टुक सम स्टेप? Yes, they took some steps. Sri Lankan Tamils launched parties and struggled for recognizing of Tamil as an official language. उन्होंने भी parties लॉन्च किया, स्ट्रगल किया कि उनको भी तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज चाहिए. दैट मीन्स दे आर नॉट इग्नोरिंग सिन्हाला. सिन्हाला जो 74% वहाँ पे थे जिन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल बना दिया था, तो वो चाहते थे तमिल भी ऑफिशियल लैंग्वेज में रहे, बट सिन्हाला को इग्नोर नहीं कर रहे थे. वो सिन्हाला भी चाहिए प्लस दे वॉन्ट तमिल ऑल्सो एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. दोनों उनको ऑफिशियल लैंग्वेज चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल, इन आवर कंट्री इंडिया we are having two official language. First one is Hindi and second is English. That way they also want Sinhala also and Tamil language also as an official language. They also want regional autonomy. Regional autonomy. They demanded for regional autonomy. Autonomy means self-governing. Self-governing means the area in which they are living, they want
their Tamil governments. So वो उनके rights उनको मिल सके, उनके languages और culture के बारे में वो लोग सोच सके. So they want regional autonomy. For an example, again we are taking the example of our country India. In India also we are having central government and state government. Only central government is not ruling the entire country. Some of the power is given to the state government. That way here also they want regional autonomy, means in their area they want their government. Next is equality of opportunity in securing education and jobs. So due to they have made a new constitution, according to that Sinhala communities are getting the advantages of securing education and in government job. So they are also demanding the equality of opportunity for securing education and job. They also demanding for independent state. They want in Sri Lanka, in the east and the north side of the Sri Lanka, Tamilian state, but their demand repeatedly denied. बट उनकी जो डिमांड थी, जो बार बार वो डिमांड कर रहे थे, उन्होंने सिन्हाला पीपल्स ने उनको बार बार डिमांड करने के बावजूद भी उनको टोटली इग्नोर किया गया, उनकी एक भी डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया. एज अ रिजल्ट द डिस्ट्रेस बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू द वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट एंड इट सून टर्न इनटू द सिविल वॉर. तो वहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो गया. बिकॉज ऑफ सिविल वॉर most of the people, both the communities Sinhala and Tamil have been killed, and most of the families were forced to leave the country, and even many more were lost their livelihood. So because of a civil war, both the communities have to face the loss, and the civil war has caused a terrible setback of a social culture, economic life of the country. मतलब उनको ये वॉर की वजह से उनको बहुत बड़ा सेटबैक हुआ इन सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री. Accommodation in Belgium. Now what do you mean by the accommodation? Accommodation means a place for somebody to live. So in a Belgium, for everyone to live together within the same country, between 1970 and 1993, Belgium changed their constitution 4 times. Why they changed constitution 4 times? Because there are 59% are the Dutch people, 40% French and 1% German there. So to live together within the same country, they changed their constitution 4 times. Now according to this constitution, what they prescribe, this constitution, equal ministers in central government. So they given equal rights to both the community in the central government. You have seen in the first video that in a central government 80% are the French people and 20% are the Dutch people, but in the whole country 59% are the Dutch and 40% are the French. But the capital city in Brussels, there are the 80% of the French people. So because of this thing, Dutch are feeling angry. मतलब के वहाँ पे पूरी country में Dutch कम्युनिटी की मेजोरिटी ज़्यादा थी, बट द कैपिटल सिटी ब्रुसेल उसमें डच सिर्फ 20% है, जिसकी वजह से सारे राइट्स जो थे वो फ्रेंच कम्युनिटी को मिल रहे थे, जो 80% सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, दैट इज इन ब्रुसेल. सो अकॉर्डिंग टू दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वल मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये उन्होंने एक लॉ बना दिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वहाँ पे इक्वली राइट होगा दोनों कम्युनिटीज़ को. Many powers of the central government have been given to the state government. So some powers are divided between the state and the central. कुछ जो powers थे वो state government को दिया गया था, and state government is not subordinate to the central government and vice versa. दोनों के पास अपने अपने rights थे. Like again we are taking the example of India. जैसे हमारे इंडिया में भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, पर दोनों को कुछ पावर्स दिए गए हैं जो दोनों एक दूसरे को सबऑर्डिनेट या दोनों एक दूसरे को इंटरफियरेंस नहीं कर सकते. Now apart from a central and a state government, there is a third kind of a government, that is a community government. Community government, it is elected by the people belonging to the one language community like French, Dutch, German, no matter where they live. So there is a third level of a government also, third kind of a government also, that is called community government. So all these steps are took to avoid the civic strifes. Strife means a fight between the communities. जैसे आपने in case of Sri Lanka you have seen कि Sinhala's peoples are not ready to change their constitution, they are not ready to give any rights to the Sri Lankan Tamils, but opposite thing happened in the Belgium
कि उन्होंने राइट्स को डिवाइड कर दिया, उन्होंने कुछ राइट्स जो थे वो डच को भी दिए एंड फ्रेंच को भी दिए। सो यहाँ पे जो पावर शेयरिंग है वो एक एडवांटेज की तरह साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पे दोनों को पावर्स दिए गए हैं, जिसके वजह से फाइट होगी जो दो कम्युनिटी के बीच में वो इग्नोर की गई, वो अवॉइड की गई।